Barriers brunch. तो फिर मैं बैरिज रोड आता हूँ, आपसे मुलाकात भी कर लेते हैं। तुम्हारी ट्रॉली तो बहुत भरी हुई है, लगता है आज तुम्हारी जेब खाली होने वाली है। Come over to the tills yard and see for yourself. Look at this, my trolley is so full. हाँ जी, ख़वातीन रात आप सुन रहे हैं रेडियो डॉन 107.6 एफएम। और आज हमने जिस मौजू पे गुफ्तगू की वो सूरा इंशिकाक थी, सूरा 84 सूरा जो कुरान मजीद की थी। और उस हवाले से हमने बात की कि अल्लाह ताला जो है वो हमें बताता है कि या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी और या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। और अल्लाह ताला हमें बताता है कि देखो भाई, मेरी ज़ात जो है वो बड़ी करीम ज़ात है, तुम कहाँ दूर जो है वो भटक फिर रहे हो। फिर हमने बात की ख़वातीन रात कुरान मजीद के हवाले से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं हैपन्ड हुई, कॉस्मोस के हवाले से हमने गुफ्तगू की। और फिर एंड पे हमने बात की कि हम किस तरीके से लोगों को जो है वो बुला सकते हैं अल्लाह की तरफ बड़े अच्छे अंदाज से। और अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और नेक अमल करता है। व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, इंडीड आई एम वन ऑफ द मुस्लिम। सो वो कहता है who could be better in speech than one who calls people to Allah, does righteous deed and say indeed I am one of the मुस्लिम। तो उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है। तो एंड पे सिस्टर ज़ोहरा ने बड़ी एक खूबसूरत मिसाल जो है वो एक मोहब्बत की, प्यार की, इस सोसाइटी में जो एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं ख़वातीन हज़रात वो मौजूद है, उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। एक पुलिसमैन का वाक़या जो है पेश किया। और जैसे ये हमेशा पता नहीं क्या वजह है कि क्योंकि ये यहाँ पे पैदा हुई हैं इसलिए ये इस कम्युनिटी के बारे में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करती हैं, जो कि हकीकत में सच है। हकीकत बात है कि ये सोसाइटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी सोसाइटी है। लेकिन वो अक्सर मैं ना एक शेर पढ़ता होता हूँ कि ज़माना तो सुन रहा था बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्तां कहते-कहते। कि ये लोग इतने खूबसूरत हैं, ये लोग इतने अच्छे हैं, इनके दिल इतने अच्छे हैं, लेकिन हम ही हैं जो सोए हुए हैं। हमारे पास इतना खूबसूरत जो है वो कुरान है, जिसको हम इनके पास मुख्तलिफ तरीकों से लेके जा सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉल लगाएँ, यानी बहुत सारे लोग ये कहते हैं वो जी मुस्लिम सोसाइटी होनी चाहिए। यार इससे बेहतर कौन-सी है कि आपको इबादत आप यकीन जानिए 18 साल हो गए मैं यहाँ पे 19 साल तकरीबन इस रेडियो पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। आज तक जो कुछ मैंने अपने ज़मीर की बात की है, ना मुझे डॉक्टर मुशर्रफ साहब ने कभी कहा है और ना ही मुझे किसी और ने कुछ कभी कहा है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपको जो है इज़्ज़त और रिस्पेक्ट जो है वो मिल रही है। तो इसलिए ख़वातीन हज़रात ये मुआशरा बहुत अच्छा है, लेकिन हम इनके पास जो है वो कुरान मजीद का खूबसूरत पैगाम जो है वो पहुँचा रहे हैं कि नहीं पहुँचा रहे। हम बेहतरीन जो है वो सोशल मीडिया का लेटेस्ट जो टूल्स है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आखिर में जो है इसको वाइंड अप कीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो उर्दू स्पीकिंग हमारे लोग हैं उनको भी हमें जो है वो ज़रूर करना चाहिए। आखिर में मुख्तसर सी समरी जो है वो बयान कर दें जी। So that was really, it's always so lovely to hear you in Urdu. Subhanallah, there's so much passion that comes across in these Eastern languages. And mashallah, you were just summarizing everything that we've spoken about very briefly, but also I think making a lovely plea to South Asian communities to kind of, really appreciate the beauty of the people that we're surrounded by, and to take the mission of, giving the message in whatever way about the Quran, teaching about the Quran, or, doing dawah, take it more seriously. I would say, Bhai, in summary, I think our communities, in terms of South Asian communities, we must remember, and I think everyone really, not even, but obviously we have more of a duty of care. We have more of a responsibility to ensure that this glorious knowledge that we have been gifted through the Quran, that we don't take it for granted. We don't do injustice against our own souls. We don't do injustice to our own children, and we don't do injustice to our communities. And above all, we don't do injustice to the beautiful people around us. So we have a duty of care to somehow,
even if it's in the smallest deeds, because remember, this is the beauty of this surah, that it is telling you, right towards the end, that those who do righteous deeds, for them there will be a never-ending reward. And it's not everybody who can go out and do media. It's not everybody who can go out and make TikTok videos. It's not everybody that can go out and be fantastic on radio. The point is, Allah sees your deeds. And if you go and be good with your neighbor, if you go and smile with an old person, or you try and genuinely, sincerely help them, Allahu Akbar, which means God is great, by the way. And we always say that as Muslims when something is amazing. But, that is what Allah will see. And I'm sure that those deeds could even be more appreciated by Allah than the other deeds. So it's Allah who judges. You're pleasing Allah. And second of all, I think the point that Dr. Musharraf makes in the commentary, which is, we are all so obsessed, aren't we, with our life here. And this surah is, telling you that you are subject to change and motion. You are not going to be here for that long. The commentary, very eloquently tells us, don't become these workaholics that just, and it's so easily said, isn't it? And because it's so easy to sort of like, for me to say, but actually the people who are stuck in these, relentless kind of jobs and work, whether you be a beautiful homemaker, a woman who's committed to a home and family, it is a relentless job. Whether you are working outside of the home, you have to be very, very mindful and conscious of the pitfalls of wanting, I think, more and more and more, or, just allowing your mind to get so occupied. I think that's the central thing for me, brother. I think if all of what's going on in the world with Palestine, with Sudan, with the Muslim Ummah being in such turmoil and such, oppression, really, I think, and now at home, everything's always been far away. It's been happening somewhere else. Well, now, you've got very real problems here. So I think that it's not just about getting out there and countering the narrative. It's also about turning back to our Lord with utter sincerity and becoming, more better people, better Muslims, really aspiring to do those good deeds and please Allah. And I think we, in the South Asian community, we I don't know by what you feel, but we may have started to sort of forget that a little bit. We may have gone off track a little bit. What would you say, Bhai? Yes, Jazakallah. बेशक आपने बहुत अच्छा की बात की. तो खुतरात इसी के I wish साथ. my Urdu was that good. No, so You'll laugh at me, right? no, mashallah, you speak very good Urdu, and my brothers and sisters, every post, every video, and every comment is an opportunity on social media. If you have to go to the social media, which that I told you already, I've been on social media, I've been on Reels, I've been on TikTok, lot of time. So what you need to do, you may never know, your comments, your liking, who they can change heart of the people. You may never know whose heart Allah will open through a kind word, an authentic verse, or a sincere act of service that you share. So may Allah make us ambassador of mercy, wisdom, and good character, both online and offline. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मनाओ सारे अपने महबूब नमीलाद मना